So last night we made our way to Nagar Parkar in very extreme weather, and it's no different right now. I must say, जब हम यहाँ पर आए तो हमने बहुत मजे की मटन कढ़ाई खाई और अपने host से मिले, whose humility and knowledge about the area was absolutely touching. एक लहजा, आरामदेह लहजा, softness, एक hospitality, एक humility जैसे फैजान ने कहा, और knowledge about where they come from, about this land that they call home. The history of the place, the natural environment, how many animals this is a sanctuary for. यहाँ पर migratory birds आती हैं, यहाँ की local peacocks होते हैं जो desert में खुले घूमते हैं, और leopards आते हैं. And rightfully, it's a protected environment. The vultures are still here. I hope to catch some इस weather में. उनकी protection पे काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ landscape बहुत जबरदस्त है. 3 जगह से we are surrounded by a border, तो एक छोटा सा हिस्सा है जो निकला है. And this is the mountainous part of the Thar Desert, which is part of the Great Indian Desert. 39% of Thar Parkar is in Pakistan. The rest of it is in India. And it's a wonderful environment. It really connects two different countries, and which are so similar in so many ways. And considering that we are shooting in difficult conditions, you know, the excitement of being here and just understanding the history, beauty of the place is still getting me excited. इसी को तो कहते हैं adventure यार. इसको कहते हैं adventure, और इसे कहते हैं कि let's explore even if it's difficult, because it's a beautiful place to explore. And it's not got explored religious enough. diversity, it's got, you know, plant life, it's got animals, it's got everything for you and I to look forward to. So let's get out there in the wilderness of Thar in this wild weather and do tonight's Let's see episode. what all we can do. Let's see where all we can go and what all we can show you guys. Come on, let's get out there. हम कहते आए हैं कि this place is steeped in the deep history of not just South Asia but the world. Right. It's very true. Reminds me of the Axis Age, the time when the Old Testament prophets in the Middle East gave us many religions, from Judaism to Christianity and then Islam much later. You know, Hinduism came, Confucius and Lao Tzu in China, and in India, Buddha gave the world Buddhism, laid the foundations of one of the most influential religions of the world, and also Mahavira laid the foundations of Jainism, to which this temple is a fine tribute. It reminds us, takes us back to the birth of conscience, really. True that. And When Mahavira, humanity was waking up to new ideas, questioning the old order, and asking why should the history of the world be written by the men of war. These were peaceful men who enlightened their communities, and this is where Jainism began, in this part of the world. And there's not just one temple here, there are 2, 3 temples here, which means that at some point in time, Jainism was really thriving in this part of the world. And it must have been quite influential in this region, कि यहाँ पे 3 से 4 Jain temples हैं, और if somebody took this effort 2000 years ago to build this intricate architecture, you know, in the middle of nowhere, you can well imagine its influence on the regional community. And I love how you mentioned that enlightenment, apni soul searching, that was the thought. And then these people put themselves under a lot of challenges. Yeah. You know, they practice extreme austerities, like not eating anything that's grown in the ground. In the ground, meditating for hours at end, sitting in a certain position and breathing and trying to achieve nirvana. Nirvana, understanding of the worlds beyond our material planes that you see. इस बात की हैरानगी होती है कि दुनिया में कितने लोग इस इलाके से गुजरे हैं, बड़े लोग, और उनका कितना इन्फ्लुएंस रहा है, उनकी कितनी एक्सेप्टेंस रही है, और ये इलाका उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट था. रीडिंग अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर बुद्धा से लेकर महावीरा, जैन्स तो हैं ही, हिंदूज़ की एक बड़ा कल्चर, रिलीजन यहाँ पे है, deep rooted, deep seated. Vibrant नजर आता है यहाँ. नजर आता है. Like all the layers of history, you know, one wave after the other. They came, they never left. They just became part of the soil. Because of the welcoming attitude, everybody can come, live and let live, साथ रह सकते हैं. They came, they flourished, and you know, you can see remnants of the great history. And that wonderful union, that wonderful unity can still be seen
in this part of Pakistan. Yeah, You know, can. it can't be said for many parts of Pakistan, but here you can really experience it. जो हमाहंगी यहाँ पर हिंदुओं और मुसलमानों में और different sects of Islam में भी पाई जाती है. It's exemplary, really. It truly is. The architecture here is remarkable, something I've never seen And I'm before. quite sure that those beautiful rocks, that serene setting in the background, set up the mood for this establishment here. यहाँ It's a- एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार Jain temples हैं, which means that this was the hub of Jainism, And possibly. clearly, this is a place of spirituality, you know. Still feels that way. Yeah. I'm surprised, Fazan, that our Sindhi friends have never really told us about these places. So I'm going to make a request on camera and ask them, okay, next time they meet people, tell them. It's so rich and it's so amazing. I'm surprised हम लोग सिंध में सारी जिंदगी रहे हैं. इतने सारे सिंधी दोस्त हैं. And they never seem to live this heritage and they never tell us about it. It's और मैं एक बात बताऊं, सिंध में इस ट्रैवलॉग के थ्रू टूर करते हुए हमारी जिन टूरिस्ट से भी मुलाकात हुई है, बिल्कुल. उनमें कितनी courtesy, कितनी तमीज. I'm really impressed by their good manners, man. Really courteous people. जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, जब हिंदुओं में किसी का अंतिम संस्कार हो जाता है तो उसकी चिता जलाई जाती है, दफनाया नहीं जाता. मगर यहाँ पर मेघवाड़ कम्युनिटी है जो कि अपने मुर्दों को दफनाते हैं. अलबत्ता ये कोलियों के मॉन्यूमेंट्स हैं. जिस जगह पर चिता जलाई जाती है, मसलन वहाँ, तो उसी के ऊपर जिनके पास पैसे होते हैं वो थोड़ा सा मॉन्यूमेंट बना लेते हैं. जिनके पास नहीं होते वो एशेस को वहीं छोड़ देते हैं और 3 दिन के बाद उनको इकट्ठा करके उन पर पानी डाल देते हैं. सो दैट बिकम्स अ लिटिल माउंड for remembrance of the dead. और कहते हैं कि कुछ कब्रें जो हैं वो तकरीबन 2-2 हज़ार साल पुरानी हैं, जिसको मानना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने जैन टेम्पल देख लिया तो इतना तो पता है कि हाँ, आबादी तो हमेशा से थी. बिल्कुल. तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है. And of course we have to keep in mind the shifting of rivers. Rivers shift होते हैं. हो सकता है एक ज़माने में ये बड़ा fertile area, fertile तो अब भी बहुत है. कहते हैं desert soil is the most fertile क्योंकि उसमें से minerals wash out नहीं हुए होते. और जब पानी आ जाता है डेजर्ट में तो फिर वो बहुत सरसब्ज हो जाता है, जैसे कि हर इस वक्त हुआ हुआ है. बिल्कुल सही है. Well, these are just monuments for the dead. इन लोगों की कोलियों की ग्रेव्स हैं तो इनकी चिता जली थी इस जगह पर और वहीं पर उन्होंने छोटा सा मॉन्यूमेंट बना दिया, which is also a synthesis of Indo-Islamic, tradition. बिल्कुल. The thing is that सबकी एक जैसे एक स्टाइल में, हाँ, it's not like आपका जो मर्जी आए बना दे टाइप. They're following a certain pattern. They are. And they look very like. यार वो तो यहाँ के लोगों के synchronized. कपड़े अगर देखो, खासकर ख़वातीन के, तो they seem from another time, वो इस दौर की तो नहीं लगती और चूड़ियाँ पूरी अच्छा पहन लगता है के. कि उन्होंने वो ट्रेडिशन पकड़ के रखी हुई आज तक. हाँ. कहते हैं Long may it कि continue. एक बरादरी ऐसी भी है जिनकी औरतें जो हैं उन्होंने एक बहुत ही गलती से एक बहुत ही अच्छे इंसान, एक नेक इंसान को मार दिया था गलती से. Really? तो उसके गम में वो हज़ारों साल पहले था, आज तक जो है वो काला रंग पहनती है, उस पे शीशे का काम पहनती है. Really? They commemorate the mistake that they made and the death of a noble man on their hands. How noble, how human. Tradition, folklore, Sindh, beautiful. Beautiful. Beautiful.